viewers, if you like my videos, then please subscribe the channel and click on the bell icon. Thank you so much to all of you. After a long time, we have live together on the current webinar that is based on the culture negotiation management. So I think we have to start the session on time, and we have started from the Shahar Arif that what you have said today regarding the today's topic, share ideas and some strategies regarding the culture negotiation management. Right. Assalamu alaikum to all of our panelists and attendees. With regards to today's topic, which is based on cultural intelligence negotiations. Basically, first of all, थोड़ा सा मैं अगर चीज़ों को ब्रेक करके बात करूं, तो सबसे पहली चीज़ जो अंडर डिस्कशन होनी चाहिए पॉइंट वाइज, दैट इज नेगोशिएशंस. अब हम प्रोफेशनल लेवल पे बात करें या इससे हट के बात करें, अनप्रोफेशनली बात करें, तो किसी न किसी स्टेज पे किसी न किसी लेवल के ऊपर हम कुछ ना कुछ निगोशिएट कर ही रहे होते हैं. अगर हम छोटे से एग्जांपल लें तो हमारे फैमिली मेंबर्स जो हैं जब कोई ख़रीदारी करने जाते हैं तो एट दैट स्टेज जो है वो भी कुछ ना कुछ निगोशिएट कर रहे होते हैं. सिमिलरली हम भी अगर जाते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ निगोशिएट कर रहे होते हैं. अब निगोशिएशन क्या होती है ये तो हमें ऑलरेडी हम सब जानते हैं, और कोशिश होती है कि अगर 100 रुपए की चीज़ है तो वो 90 रुपए की ले लें, 1000 की चीज़ है तो 800 की ले लें. लेकिन जब हम बात इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करते हैं इंटेलिजेंस का और देन कल्चरल इंटेलिजेंस का, नाउ हियर वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द डिफरेंस between the culture, between the behaviors, between the motivations, between the cognitive approaches, between the meta cognitive approaches. तो इसका मतलब ये है कि हम जो थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया, ऑल्दो आई एम नॉट वेल ऑफ विद रिगार्ड्स टू दिस टॉपिक, बट जो थोड़ी बहुत मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया उसके हिसाब से, जब हम कल्चरल इंटेलिजेंस का फ्लेवर नेगोशिएशंस के अंदर ऐड करते हैं तो नाउ हियर वी आर एक्चुअली फोकसिंग द डिफरेंट पीपल. अगर हम कराची के अंदर मौजूद हैं तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सिंध के सूबे के अंदर हैं तो हम पंजाब के साथ बलूचिस्तान के साथ, सरहद के साथ. But here we are not actually considering the country level only. Across the borders, country wise भी, globally, अगर हम कल्चरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ग्लोबली बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने मामलात को निगोशिएट करें ग्लोबली based on their understandings, their thoughts, their standards. तो इसका मतलब ये है कि फिर ओवरऑल हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर हम निगोशिएशन की तरफ जाना चाह रहे हैं और ग्लोबल निगोशिएशन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर हमें कल्चरल इंटेलिजेंस का फ्लेवर निगोशिएशंस के अंदर ऐड करना होगा. अब यहाँ पर डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद होंगी जिनको फॉलो करना या कल्चरल के जो इम्पैक्ट्स हैं उसका फ्लेवर अपनी नेगोशिएशंस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना, डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसे पैरामीटर्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी बैकग्राउंड्स में जिसको मोस्ट लाइकली फॉलो करना ज़रूरी होगा ताकि आप अपनी निगोशिएशंस में सक्सेस गेन कर सकें.
अब इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स मेरे सामने आए हैं इन ब्रॉडर टर्म्स, दैट इज मोटिवेशनल cultural intelligence, then I say cognitive intelligence, meta cognitive intelligence, behavioral intelligence. ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जो कि अगर आप कल्चरल इंटेलिजेंस का फ्लेवर अपनी निगोशिएशंस में ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये इन ब्रॉडर टर्म्स these four are the main points which required to be incorporated in the negotiations. अब अगर हम वन बाय वन करके देखें या इसको स्टडी करें, तो अगर हम बात करते हैं लाइक मोटिवेशनल इंटेलिजेंस की, तो इट मींस के वी आर एक्चुअली फोकसिंग द डिजायर्स, इंट्रिंसिक डिजायर, लाइक आपकी अपनी थॉट्स हैं जिनसे आप निगोशिएट कर रहे हैं, उनकी अपनी एक कुछ थॉट्स हैं, कुछ सोच होगी, वो कुछ लाइक डिफरेंट किस्म की इंगेजमेंट्स चाह रहे होंगे, आपकी अपनी थॉट्स होंगी, तो उसका फ्लेवर फॉलोइंग दी मोटिवेशनल इंटेलिजेंस आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो, ताकि आप दोनों चीजों को किसी ना किसी स्टेज पर जाके मैच कर सको। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की या नॉलेज की, तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी वैल्यूज, उनके नॉर्म्स, उनकी प्रैक्टिसेस, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। व्हाट इज योर्स एंड व्हाट आर दे एक्चुअली फॉलोइंग। तो इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट लेवल्स को एट द स्टेज ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, आप उसको वहां पे जाके मैच करने की कोशिश कर रहे हो, निगोशिएट कर रहे हो, ताकि दो एंड के ऊपर एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, उनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। सिमिलरली अगर हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो दैट्स मेटा कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, जिसके अंदर बेसिकली लाइक आप अपने जो एक हर इंसान का अपना एक मेंटल प्रोसेस होता है, और वो अपने दिमाग के अंदर एक स्ट्रैटेजी सेट करता है कि मुझे ये काम को इस तरीके से सेट करना है। तो उसका मतलब ये है कि अब अगर आप मेटा कॉग्निटिव अप्रोच को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, then it means you are adding the flavor, the same flavor of the opposite component, जिससे आप निगोशिएट करने का प्लान कर रहे हो। तो उसका मतलब उसके लिहाज से भी चीजों को आपको कनेक्ट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू मेंटल प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजीज, कि जहां पे आप दो डिफरेंट कल्चर को कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप अपनी एक डील तय कर सको, अपना एक व्हाट यू आर गोइंग टू डू just to connect that work with their culture. And the fourth one is behavioral intelligence, like how you behave, what's your communication style, what's your mannerism, जो आप फॉलो करते हो और जो उनके एंड पे फॉलो किया जाता है, उसको स्टडी करना, उसको देखना, उसको उसका फ्लेवर अपनी डिबेट के अंदर ऐड करना। तो ये चार मेन ब्रॉड पर्सपेक्टिव हैं, जिसको मेन टर्म्स कह सकते हैं या लाइक एलिमेंट्स कह सकते हैं, कि ये चार मेन एलिमेंट्स हैं कि जिनको मेनली फोकस करना जरूरी होता है जब आप कल्चरल इंटेलिजेंस का फ्लेवर आप जब निगोशिएशंस के अंदर ऐड करते हैं, इन ऑर्डर टू गेट द ग्लोबल एक्सेप्टेंस फॉर योर प्रोजेक्ट, फॉर योर निगोशिएशंस। आई थिंक यहाँ पे मुझे पॉज लेके बाकियों को मौका देना चाहिए, ताकि वो मजीद इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें चीज़ों को। जी ज़ीशान जावेद साहब। जी Zeeshan Javed sir, what you have said regarding the today's topic that is based on the culture of negotiation management. जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, it's a very good topic and Dr. Zishan Saab explained it in a very eloquent way. I really liked the way he
manage the whole topic. Yani, this topic actually spells out everything when you have to strike a deal or when you have to actually make your ends meet in a business as well as in a personal context. So, as he explained very rightfully, so as he said that there is a cognizance involved, intelligence involved, plus the cultural context is also involved, and that is very true. I have witnessed this thing that if you are in some place, say if you are in KPK, and then you are in some mid-city, midland Punjab, then there will be absolutely the only point which is the deciding or the decisive factor in striking a deal or in making up a deal is your communication skills and your intelligence about the whole area. If you commit a mistake of such sort that is offending to the cultural context in Punjab or in KPK or even in Karachi or in ICT, you will make a big blunder out of the whole deal. So, as they say that do as Romans do while in Rome. So this actually is the basic, the most fundamental attribute in a communication setup. That when you're communicating to a local person, then you have to be streetwise about that particular area, that particular genre, that particular language. You should know about the sensitivity of that place and whatever is going on, coupled with the fact that he rightly pointed out that what is the motivation of having a business deal, or what is the cognizance, like if you understand the mentality, you understand the culture prevailing in that particular domain of a business concern. So, in my view, the essence of the topic is that if you can really relate to the negotiation, plus the negotiation actually means your communication skills. If your communication skills are up to the mark and backed by the fact that you also know the local context and the people around the populace and their thinking pattern, so you could be really successful. And I would say that this would mark the end of my discussion. Thank you very much. Any questions, I would welcome them. Thank you, Zeeshan sir. Thank you so much. Anyone else? Ji Sadia, what you have said today regarding the today's topic that is based on negotiation, management, and culture. I think, sir, these are all valid issues. We can talk about business management and cultural difference. But somehow इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं सर कि specific aspect of business management के हैं जो कि हमें टीम स्ट्रेटेजी प्लानिंग से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से होते हैं, फिर लीडरशिप है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है. These are all involved in culture as well as cultural also. As they know about the business management is regarding to performance, adapting the changes in the internal, external, environmental situations, and as well as business management aim to optimize processes and ensure the organization success. In the short, let's break it up in planning, organization, directing, controlling, etc. Let's talk about the planning. Okay, it's a roadmap for your business organization. Think of this as setting up the structure of the business, and also you decide who does what, how different parts of the business fit together and how they work together. So the next is directing. This is all about leading and guiding your team. Instructions, motivate them. Everyone is working towards
different goals or same goals, whatever. Next part is, I think, is controlling. How to control. This means, sir, I think so. This means keeping an eye on the things to make sure they are going as planned. Somehow planning is missing, up to the mark, और आप वो रिजल्ट ले लेते हैं, बट somehow आप वो रिजल्ट गेन नहीं करते. उसमें बहुत से एस्पेक्ट्स शामिल हैं. और last but the not the least is business management effectively when the all circumstances are go in a proper way. Strategic planning hai, team management hai, financial management hai, marketing strategies hai, and more or. Now, I think so. This is the basic things we can discuss regarding business management and cultural aspects. So, this is all about it on my side. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sadia. We have here Dr. Bakasi over here, and welcome to the first webinar. And I want that what you have said regarding today's topic and share some ideas and experiences regarding the cultural negotiation management nowadays in the corporate sector. Thank you so much, and assalamu alaikum to everyone. So this is my first participation in webinar. First of all, I would say that it is very interesting topic, and in today's world where we are working in multicultural organization, our first presenter, he talked about Pakistan. Even living in Pakistan, we have people from different provinces, and when we are negotiating with them, we are very careful, because in every region the culture is different. And a very small example is like in Pakistan, this is our culture that when we meet someone, we ask about their family. ठीक हो, बच्चे ठीक हैं, घर बार खैरियत है. But when we go to some foreign culture in Europe, for example, if we ask about such questions from them, it will be very impolite. So when you are negotiating something with someone, you have to make a connection, and that connection can only be made when you understand their culture. So our thinking, they are based, our perceptions, they are based in our cultures. So understanding culture is extremely important when it comes to connecting with other people, and connecting with other people is extremely important. Rather, it's something we can say that we cannot live without in today's corporate world. So I would be talking about the important aspects of cultural intelligence. That is, first is knowledge. And knowledge means that how much do we know about our culture, and how much do we know about someone else's culture. So having the knowledge is very important. If I am dealing with someone that belongs to Chinese culture, then I first need to know that what those people think about, what are their norms, what are their different behaviors, what are their different attitudes, and how do they like to talk and deal with the people, especially when they are doing some kind of business. So based on that knowledge, we need to look at what drives their motivation, what is their confidence, and how much confidence they put in other their partners whom they are working with, or the people who are their colleagues, or their to be potential partners. And after that, we can have or define that what action needs to be taken when we are dealing with them. That can include how do we need to behave, what kind of attitude we need to show, what kind of speech acts, what kind of body language we need to show, what kind of behaviors we need to show, verbal, non-verbal. So everything is included in that. Even the use of language is very important, because in some cultures, always talking about I or me, this is not, it is not liked. But they like to talk about some collective pronouns, or they like to talk about
the things which are covering every aspect. So we need to careful about that as well. For example, in Urdu, we usually, when we praise someone, we use strong adjectives. But when we see the English culture, they are not into using such language. So they take it as flattery or something that is out of the context. यहाँ पे हमारे यहाँ जब स्पेशली बॉस से या किसी सीनियर से मिलने जाना होता है तो हम सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि 2-4 तारीफें करें, ये भी बताएं आपका ड्रेस बड़ा अच्छा है, ये भी बताएं आप बड़े फ्रेश हैं, आप बड़े खूबसूरत हैं, आप बड़े हैंडसम हैं. But when we see in other cultures, they do not like to go into such things. So there are these differences. And the fourth point is strategy. Said that what could be my plan, and it is of course related with the action, that I have to strategize everything, that how I am going to deal with my partners, my potential business colleagues. So how I am going to deal with them. I need to have the awareness, and definitely at metacognition level, how I am going to deal with them. What need to be planned, what need to be checked, what need to be in my checklist before I'll be dealing with them. So these are the 4 main aspects of cultural intelligence. And of course, the things that we need to learn when we are dealing in diverse settings. Over from my side. Thank you, Dr. Tabakasia. Thanks a lot for giving us the time, and I will come back to you again. We move forward to Zeeshan Javed Saab to continue the second out the things and proceed further with the discussion. Right, Ji. Thank you so much, and thank you so much, Dr. Vakasia, for adding the multiple aspects related to today's topic. What I would like to add is the importance, like being to become a best or better negotiator. What is required to understand is the importance. कि अगर किसी इंटरनेशनल बिजनेस लेवल पे चीज़ों को अगर सेटल डाउन करना है तो इसका मतलब ये है कि यू वुड रिक्वायर टू you would also consider the importance of cultural intelligence, like building a trust and relationship. The one of the main component or parameter to understand how the cultural intelligence can be can play the important role while negotiation. So building trust and relationship can say the important part of that component, where two parties are negotiating along with adding the flavor of trust and relationship. जब तक ये फ्लेवर आपके डील के अंदर ऐड नहीं होगा दो पार्टीज के दरमियान, तब तक आपका बिजनेस कॉन्फिडेंटली ग्रो नहीं कर सकता एट ऑल लेवल. चाहे वो इफ वी डिस्कस दिस ऑन लोकल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, इन बोथ केसेस जहाँ पे बिजनेस डील्स की बात होगी, जहाँ पे निगोशिएशन की बात होगी, वहाँ पे ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप का जो फ्लेवर है वो ऐड होना चाहिए. लाइक यू शो योर ट्रस्ट, अगेंस्ट पार्टी शो देयर ट्रस्ट, and build a relationship based on trust will be the core infrastructure while dealing with any negotiations. Like इसी तरीके से जब हम बात करते हैं दो पार्टीज जब आपस में they connect with each other, that at that stage ultimately बहुत सारी misunderstandings जो हैं वो create होती हैं. This is the second parameter in order to understand how the importance can be added in order so that we can negotiate the business. तो इसका मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपस में आपको नजर आती हैं आपके पार्टी के साथ, पार्टी की आपके साथ, तो उसको मिटिगेट करना कि कहाँ पे क्या चीज मिसअंडरस्टैंड हो रही है, उसको क्लियर रख के चलना.
तो अगर तो इस चीज के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आप एक प्रॉपर कल्चरल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट डेवलप कर रहे हैं। सिमिलरली जो चीज ऐड की जा सकती है एज एन एडिशनल कंपोनेंट, दैट इज कम्युनिकेशन। आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है, लाइक इनिशियली डेफिनेटली जब बातचीत स्टार्ट होती है, चाहे हम लोकल बिजनेस की बात करें या इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो वो एक बिल्कुल इनिशियल लेवल पे स्टार्ट होती है जहाँ पे ब्रॉडर टर्म्स के अंदर चीजें डिस्कस होती हैं। देन यू गो स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप। तो एट एनी लेवल जहाँ पे चीजें इन डेप्थ डिस्कस की जा रही हैं तो वहां पे अल्टीमेटली आपकी जो कम्युनिकेशन का लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाता है, वहां पे चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो वहां पे इसका मतलब ये है कि फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो उसके अंदर ऐसा एक फ्लेवर ऐड होना चाहिए, लाइक यू आर सिंसियर विद योर बिजनेस एंड यू आर अगेंस्ट पार्टी शोइंग यू दैट दे आर इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस विद यू। तो इसका मतलब ये है कि फिर दोनों एंड से जब इस तरह का फ्लेवर ऐड होगा और कम्युनिकेशन प्रॉपर होगी तो अल्टीमेटली इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगी। इसी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं लाइक इनोवेशंस, प्रमोटिंग इनोवेशंस, कि आप जब एक काम करने जा रहे हो तो इसका मतलब आप एक चीज ऐड करो कि हाँ ये काम हम अगर इसको इस तरीके से करें, what new thing we can add in the process or in the existing setup, कि जहां पर हम मार्केट को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे सामने आए थे कि कल्चरल इंटेलिजेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है while negotiating with the parties। तो ओवर टू यू सर जीशान जावेद साहब, ताकि बाकी भी इसके अंदर मजीद फ्लेवर ऐड कर सकें। थैंक यू। जी जी, इसमें जिशान साहब मैं एक आखिरी बात उस वक्त चूंकि थोड़ा बिजी था एक बात करना चाहूंगा, जी प्लीज सर। इजाजत हो तो। जी जी, जो आपने फरमाया ना ये जी बड़ी श्योर व्हाई नॉट। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये बड़े पते की बात आपने की कि भाई जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो जो मैटर है ना, जिस बात पे जिसको मुद्दा कहते हैं उर्दू में और हिंदी में, वहां पे जिस तरह से अप्रोच करने का एक तरीका कार है ना बिजनेस सेटिंग्स में, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब अगर उस पे आपकी मास्टरी है तो फिर आप समझे कि आप जो है वो यू आर द किंग ऑफ द डॉग टाइप बंदा हो जाता है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अगले बंदे को कैसे कन्विंस करना है, अगली पार्टी को किस तरह से जो है वो अपने लिहाज से टोन में लेके आना है। तो ये एक बहुत बड़ी स्किल है, और ये फिर स्ट्रेटेजिक सेटिंग्स में, और फिर जैसे आपने ये बात बड़ी जबरदस्त आपने उस वक्त बताई कि यानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी आप एक गांव और कस्बे से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स की न्यूयॉर्क, जहाँ पे बिजनेस दुनिया का जहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रेड स्टार्ट होता है, जहाँ से सारा कुछ, वहां तक भी आप कामयाब हो सकते हैं कि एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू टॉक वेल, हाउ टू कम्युनिकेट वेल, हाउ टू स्ट्रेटेजिकली बात करने का एक तरीका कार होता है ना। तो ये मैं कहना चाह रहा था, आखिरी बात जो रह गई। शुक्रिया। Thank you so much to all of you for this precious time out of the busy commitments as well. Because on the weekend everyone is busy on the things. So inshallah we will meet in the upcoming sessions that relates to the project management and leadership management, and also we are focusing on the project 360 summit. And inshallah I am doing a meeting with segregately with the Lahore chapter, Islamabad chapter, and visually with the Karachi chapter as well, and also discuss Shan Arif sir that helped me out in printing out the things regarding the summit as well. Thank you so much to all of you, and inshallah we will meet up in the upcoming session soon. Thank you so much. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much. Allah Hafiz.